Hello everybody. Welcome to the lecture of Chemistry Grade 11. In this video, we will be starting the chapter number 3 with valence bond theory. I will be going with the Synth textbook board context and I will be explaining from this book because I don't have any other online source rather than this. So, so don't please get yourself stuck in KPK or Synth. You are just a learner and start learning whatever you get. So going with theories of covalent bond and shapes of bond. Theories of covalent bonding and shapes of molecules. So in this chapter, I'm giving a basic introduction. We will be discussing about the covalent bond theories, hybridization, shapes of the molecules, in hybridization, in MOT and in VBT, including whisper theory, and you will see how molecular shapes and bond polarity combine to create a polarity for the entire molecule, and how molecular shape influences biological function. And we will also be discussing theories based on quantum mechanics. Valence bond theory explains how the observed shapes arise from the interaction of atomic orbital, and MOT purpose purpose is the existence of orbitals that extend over the whole molecule. The Lewis concept of formation of covalent bond as a shared pair of electrons between two atoms does not explain the shape of molecules whole. The Lewis concept was a very basic structure or the very basic concept of the formation of covalent bond, which does not explain many of the covalent functions like shapes of the molecule, like bond energy, bond length, bond strength, and everything. Then VBT described the bond energy, bond length, and bond strength. But I think it was also unable to identify some other errors. Then MOT appeared and gave some ideas. However, modern theories of chemical bonding not only explain most of our experimental observations, but also allow us to predict the shape and geometry of molecules. We will also be discussing geometries in this chapter, including predicting the shapes and observing the molecules. These theories can also be used to predict many physical and chemical properties of molecules, which the physical and chemical properties of molecules include bond length, bond energy, and bond strength. And other molecular energies like the strength of the bond, which bond is weaker and which is stronger, will also be discussed over here. So first of all, in this book, we have whisper theory, but we will not be starting by whisper theory. We will go with the valence bond theory. Okay, we have two theories to understand chemical covalent bonding. Okay, one is valence bond theory, and the second one is covalent bond theory. We should use lectures for this. Valence bond theory was given by Hitler and London in 1927. Okay, which focuses on electronic configuration and atomic orbital. Okay, which was mainly built on electronic configuration, including atomic orbitals. One more thing that I wanted to tell you is about covalent and ionic bonding. Here it's written, coordinate or covalent bonds are directional, while ionic are non-directional. Okay. Now VBT states that electron occupy atomic orbitals rather than molecular orbitals. What does it want to state that over here? Okay, we'll be discussing in detail in the book. VBT also says that orbitals mutual sharing of valence electrons present in orbital. Sorry, I've written orbital twice over here. Some sentence misprinting or sorry, sentence typo error. Mutual sharing of valence electrons is present in orbital. Or what happens that when we have orbitals, we knew that we have atomic orbitals. Okay.
For example, these are two orbitals, and they take part in when they are valence or when they are valence electrons. We know in orbital there is a maximum capacity of two holding two electrons, and for example, this is the one electron. Oh, this is the one electron, and one electron is also present over here. So it is stated that by following the Hund's rule, it is stated that the valence orbitals or the orbitals will take part in the what we say in bonding. Yeah, the bonding will be of what we say orbitals rather than molecular orbitals. It will consider atomic orbitals. Atomic orbital means when we have H H combining together. Okay, we know they have one electron in the valence, and now these this atomic orbital and this atomic orbital taking place in bonding rather than the whole molecular bonding. Okay, it is stated that, and it also stated that electrons are present in orbital. We know this, and the sharing occur between the valence electrons of half-filled orbitals. Up here, whenever I'm speaking orbitals, you should understand that there are only half-filled or partially filled orbitals which take part in bonding. Half-filled and partially filled means which have half a spin or does not complete a whole spin. They're not like this. This is a full-filled electron and they do not take part in what we say in bonding according to Hubble principle and Hund's rule. And according to Hunt rule, there will be in degenerated orbital, mean the orbital with same energy will have the equal number, will be like filled by 1, 2, 3 rather than 1, 2, or 3 because it increases stability and reduces energy. The theory stated that overlapping or partially filled atomic orbitals is done when we have a covalent bond. What do I want to say over here? For example, I will let me check. Do we have any physical? Up here, what it was saying that overlapping is occurred in valence according to valence bond theory. Okay, तो valence bond जो theory है वो कहती है कि जब हमारे पास orbitals हैं, we know कि हमारे पास orbitals किस तरह दिखते हैं. They're like this. For example, S और S, तो ये दो orbital हैं. Okay, ये हमारे पास दो S और S ऑर्बिटल हैं. इन दोनों की जब बॉन्डिंग होती है या बॉन्ड बनता है इनके दरम्यान में कोई कोवेलेंट बॉन्ड, so they are overlapped with each other. You can see here in the black section we get overlapping, and this section is basically responsible for holding electrons or the electrons. The maximum chance of electrons to be present are over here. This is what we say VBT states. Here, I also explained that linear overlapping is head-to-head, and we will be discussing it later, okay? Intensity of overlapping or matters, okay, is optimum or occurs at optimum position. Up here, you can't overlap it like you wanted to do like this, so you got a maximum overlap. And no, it's like it happens at an optimum position, which is usually almost described or have been designed sorry designed like this. It cannot be around the nucleus because जो nucleus है वो एक दूसरे को repulse करती हैं, इसकी वजह से we can't overlap more much than this because उसके बाद वो electrons और nucleus आपस में बहुत करीब आ जाएंगे जिसके वजह से वो दोनों repel करेंगी, and we know because of strong nuclear forces तो वो it will not suit. Okay, but एक बिल्कुल optimum position होती है इनकी जहाँ पे सबसे ज्यादा repulsion कम होती है, उस पोजीशन पे लोग खड़े हो जाते हैं. ओके, it's stated that. Now here we should see the orientation. Atomic orbitals should be unpaired. We know कि atomic orbitals को unpair होना पड़ेगा because I told you कि अगर atomic orbitals जो हैं उनमें
हाफ फिल्ड होंगे तो ही वैलेंस बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन अगर अगर फुल ऑर्बिटल होगा तो इट विल टेक पार्ट इन द bonding. अब orientation of orbital remains same during covalent bonding. अब when we have covalent bonding, तो orientation जो होती है orbitals की remains same. Orientation means energy. Okay, energy same रहती है, energy change नहीं होती. Okay, covalent bonding. अब now see, we have oxygen and non-oxygen. We know that the electronic configuration, and I told you that VBD depends on electronic configuration, so we are electronically configuring these. It is 1s2, 2s2, 2p4, 1s2, 2s2, 2p4. We know that now we can see this orbital, or like the orbitals we will be classifying much. It have three or further orbitals and have three further orbitals. अब now we have to check कि कौन से orbitals are unpaired. We can see दैट एक जो ऑर्बिटल है इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है पहले एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एंड द फोर्थ वन विल गो ओवर हियर. आप इसमें रख लें, इसमें रख लें, बिकॉज ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, तो आप इसमें जेड में रखें, एक्स में रखें, एक ही बात है. लेकिन हमने जो हंस रूल के मुताबिक पढ़ा है उसमें हमें मतलब एक 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 करके फिल करना होता है. उसके बाद एक का किसी में भी एक, अगर एक है तो वो भी किसी में रख सकते हैं, दो है तो फिर वो दो एक एक करके किसी में रखना है. तो इट्स लाइक एक एक करके आपको रखना है पूरा. आप ऐसे नहीं कर सकते कि दो इसमें रख दिया, दो इसमें रख दिया, इसमें कुछ भी नहीं रखा. इट विल नॉट बी लाइक दिस. वी हैव टू what we say, we have to distribute them evenly. अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन थे, हमने एक एक इसको दे दिया, और हमारे पास अब चौथा भी है एक, तो हमने चौथा वाला इसको दे दिया. यहाँ पे मैंने इसको दिया हुआ है, बट यू कैन गिव इट टू दिस. नीचे भी हम यही करेंगे. हमारे पास तीन जो ऑर्बिटल है फर्दर, उसके अंदर हमें चार जो इलेक्ट्रॉन है उनको डिस्क्राइब करना है. हमें पता है पी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं. हमने कर लिया, एक आ गया और एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया. अब हमारे पास चौथा है, तो चौथा वाला हम इधर दे देते हैं, जो कि ये बन गया एस4. अब नाउ यू कैन सी वी हैव टू अनपेयर्ड ऑर्बिटल्स. इसका एक पेयर खाली है, एक इसका पेयर खाली है. ठीक है, यू कैन से कि इसमें दोनों सेम स्पिन है, तो ये क्यों पार्टिसिपेट नहीं है, ये कैसे करेगा, यू नो, ये तो रिपल्स करेगा एक दूसरे को. नो इट वोंट. जब इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, सो इट विल चेंज इट स्पिन कंसिक्वेंटली. ओके, और सेम विल हैपन विद दिस. यहाँ पे भी अपनी स्पिन चेंज कर लेगा, एंड देन दे विल बॉन्ड. अब what about sigma and pi bond everything? I'll explain it later to you by using these examples or by using this lecture. But now, first of all, let's discuss the postulates. And first of all, discuss the VBT. VBT was proposed by Hitler in London in 1927, and later on developed by Pauling. Pauli, it's not Pauling, it's Pauli. Okay, developed by Pauli. The concept is based on wave mechanical treatment of molecules and has been successful in explaining the bond energies, bond length, and shape of covalent molecules. So it is telling that what were the properties that were explained by VPT was bond energy, bond length, shape of molecule, and bond strength. Bond strength is, I think, also explained by Valence bond theory. And also it is stating, or it is stated that it is based on wave mechanical treatment of molecules. अब now don't go in that much detail of wave mechanical treatment of molecules क्या होता है. It is something in higher chemistry or higher level chemistry. Okay, अब according to this theory, a covalent bond जो होता है वो कैसे बनता है. अब according to this theory हम लगाएं तो जो एटॉम जो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास बनता है ना, दैट इज बाय पार्शियली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल. जो हमारे पास वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मैं अब पार्शियली फिल्ड को आई एम कॉलिंग वैलेंस. इलेक्ट्रो जो वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास किसी भी उसमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास H है. ठीक है, अभी देख H. H का हमें पता है क्या है, उसका 1s1 उसकी कॉन्फ़िगरेशन है. तो अगर हमें पता है एस के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है, तो एक ऑर्बिटल है और यूं करके यूं स्पिन है. अब दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन और दिस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विल टेक पार्ट इन द बॉन्डिंग एंड विल ओवरलैप. अब ये किसी और के साथ ओवरलैप करेगी. ओवरलैपिंग मीन्स लाइक दिस, किसी और हाइड्रोजन एटम के साथ या किसी भी एटम के साथ जिसकी बॉन्डिंग 1 हो, और ये जगह जो होगी यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी होगी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स. And this will be the main, or this is the main concept of this theory. I hope you understand. Now it is saying that overlaps with the partially filled atomic orbital. I told you कि कोई और एक और partially filled atomic orbital आएगा तो वो उसके साथ ओवरलैप करेगी. एंड रिमेंबर दिस, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते. तो व्हेन दे विल ओवरलैप, तो इनके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, they will complete their bonding, or they will be
बैलेंस्ड और स्टेबल, ठीक है। और जब हमारे पास एक पार्शियली फिल्ड को किसमें कहेंगे, जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन हो, दैट विल बी पार्शियली फिल्ड और हाफ फिल्ड, ओके। एंड it also states that the overlapping of atomic orbitals retain their identity, they don't change their identity, okay. The term overlap means that the two orbitals same have common space and region. Up overlapping, what does overlapping means? You all know, as a general definition of overlap means एक के ऊपर एक आ जाना और sharing a common place, okay. अब now this space is overlapping और these are both circles are overlapping, और ये जगह ये दोनों की common भी है और ये एक के ऊपर एक आ रही है, so that is the main concept of VBT. And now discussing the postulates of VBT, it states that a bond between two atoms is formed by the overlap of half-filled atomic orbitals of two atoms. कोई भी दो एटम जो हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, जैसे हमने वहां ऊपर में सारा एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट एक्सप्लेनिंग अगेन, ओके। हमारे पास दो एटम है, उनके जो पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, अब जैसे H के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, ओके, दैट इज पार्शियली फिल्ड, दैट इज पार्शियली फिल्ड, ओके। बट हो सकता है हमारे पास Na हो, नहीं Na के अंदर भी एक ही होता है, सॉरी। हो सकता है हमारे पास कार्बन हो जिसके अंदर चार हो सकता है हमारे पास बेरिलियम हो जिसके अंदर भी दो हो, एक दो हो और एक हो, सॉरी। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बट जो हम लोग जे लेंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को लेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें मैटर करते हैं। जो पोस्टुलेट वीबीटी है वो बेस करती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे, इट इज बेस्ड ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। the and the overlapping atomic orbital retain their identity means they retain their identity, they don't change their orbital. If we have an s orbital overlapping with s, so they both will remain ss. If we have s with p, so it will remain sp, we will have sp orbital. This is the thing that they won't change their identity and don't make a new identity. The two overlapping orbital must have electrons of opposite spin. अब जो दो overlapping orbital हो, इनके पास इलेक्ट्रॉन जो हो opposite spin के हो, okay? Opposite spin. अब you can say that we don't have a opposite spin, but you know when they will start the covalent bond or will start bonding, they will directly have their opposite spin, okay? अब वो opposite कर लेंगे spin को. The number of bond formed by an atom is equal to the number of unpaired electrons present in the valence shell of the atom. It is saying कि जो वैलेंस शेल जो होता है एक एटम का, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, दैट इज द नंबर दैट द now it is stating that the equal number or the number of unpaired electrons will be present in the valence shell of the atom. But here you can say that how is it possible? हो सकता है हमारे पास वैलेंस शेल में ऐसा हो कि हमारे पास वैलेंस शेल जो हो वो 2p हो या 2p6 हो, ओके। और हमारे पास जो atomic जो orbital हो, likewise we have of what do you say, I don't know, likewise we have of carbon, तो यहाँ पे ये फेल हो जाती है बात कि कार्बन के अंदर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, बट अकॉर्डिंग टू दिस वीबीटी थ्योरी तो कैसे होगा कि एक स्पिन एक में आ गया, एक में आ गया, फिर सॉरी एक में आ गया और फिर ये वाला एक इसमें आ गया, तो ये वाला तो पूरा हो गया कंप्लीट, इसको क्यों हम लेंगे और सिर्फ इन दोनों को ही लेंगे? सो नो, इट्स नॉट लाइक दिस। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जो कि हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है दैट गोज विद वो करके फिर हम वीबीटी लगाते हैं ऊपर एंड दैट बिकम्स द बेसिक कॉन्सेप्ट और दैट बिकम्स द व्हाट वी से बॉन्डिंग टाइप। अब द नंबर if only two orbitals overlap, for example एक दो orbitals हैं जो overlap किए हैं, ठीक है। अब now you will say कि why only two, because दो से कम orbitals overlap कर ही नहीं सकते ना, एक orbital है तो वो किसमें करेगा, दो orbital होना तो एटलीस्ट लाजमी है ना overlap के लिए, तो एक सिंगल बॉन्ड बनती है। अब जब हमारे पास दो है तो सिंगल बॉन्ड बनी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इसका क्या नाम है, जो ये एक बॉन्ड था इसका, हमारे पास ये वाला बॉन्ड भी था और इसका भी था हमारे पास ये वाला,
वो पी वाई भी था, इसका ऐसा, इसका पी एक्स भी होगा, मैंने गलत बना दिया है। तो पी एक्स हो गया, पी वाई भी है तो पी वाई हो गया, तो ये कितने बॉन्ड बन गए, एक ये वाला बॉन्ड हो गया और एक पी वाई का बॉन्ड हो गया, सो देयर आर टू बॉन्ड्स, ओके। If additional orbitals of atoms overlap, then multiple bonds are formed. ये कह रहे कि if we have additional orbitals, then multiple bonds are formed. In order to form a bond, अब अगर हमें bond find करना है, the orbital, the overlapping orbitals must have the same symmetry with respect to bond axis. Okay? In order to form a bond, जो है कोई भी bond हमें बनाना है, तो orbital जो होंगे उनकी symmetry same होनी चाहिए. Okay? With respect to bond axis. अब what is bond axis? जो bond axis जो होती है ना, वो एक, for example, ये atom है, उसका nucleus दूसरा nucleus. अब this line joining, I have like whether this is a straight line, but I can't draw it straight. That line joining is called the bond axis. Okay, they should be symmetrical. For example, you have S, so they should lie over like this. Or for example, you have PY and PX. Here you have PX. So they can't overlap or they can't bond because they don't have the same symmetry. In overlapping of orbitals, energy is released. The greater the overlap of the orbitals, the greater the energy released, and the more stronger will be the bond form. As we stated over there above, that it also explains bond strength and bond energy. It is saying that the energy released is directly proportional to the stability. अब जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी, which means the high energy is directly proportional to the stability of the bond. Okay, but अगर हम देखे जाए तो निकल जाएगी सारी एनर्जी, जो बॉन्ड के इसके अंदर एनर्जी बचेगी वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी. फिर दैट एनर्जी जितनी इसके अंदर हम कहेंगे कम होगी एनर्जी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी. ज्यादा रिलीज होगी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, जब ज्यादा रिलीज हो जाएगी तो इधर कम बच जाएगी, जब कम बच जाएगी तो भी ज्यादा ही स्टेबिलिटी होगी. सो दैट इज द रिलेशन दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. अब टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्डिंग आर major topic to be discussed over here, which is sigma bond and pi bond. Okay, let's discuss this, and after that we will be having the postulates of the drawbacks. Up now you should understand that they're according to their symmetry of joining and according to the axis they are bound on, okay, or according to the bonding that they have between, for example, overlapping that they have between, they're classified into two types. Covalent bonds are classified into two types on the basis of their overlapping or on the basis of their bond axis. Okay, one is sigma bond and one is pi bond. Okay, we should understand कि ये जो sigma and pi bond है are on the basis of orbitals. Okay, ये orbitals की basis पे बनाए गए, orbitals की basis पे, और orbitals की ही basis की बुनियाद पे उनकी bond axis, उनकी overlapping और उनकी bond. ठीक है, so you can't describe it with any other thing. अब any bond that is parallel to the bond axis, for example, I told you that this is bond axis. Okay, अब जो भी bond बनेगा that is parallel to this line is called sigma bond. Okay, ये जिसकी head to head क्या नाम है वो हो, तो दैट इज कॉल्ड हेड टू हेड. ओके, अब हम हेड टू हेड कैसे कि इसका हेड आर टुगेदर, इसका हेड एंड इसका हेड आर टुगेदर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हेड टू हेड ओवरलैपिंग और पैरेलल टू बॉन्ड एक्सेस. ये होती है सिग्मा बॉन्ड की निशानी. And in a sigma bond, the region of the highest electron density is symmetrically distributed around the bond axis. अब how is it symmetrically distributed? You can ask me this. कैसे symmetrically distributed है? You can see कि ये हमारे पास जो है ये है, ये bond axis का ये जो maximum electron density उसका region है. अब bond axis जो होती है वो इसको symmetrically divide कर देती है दो हिस्सों में equally, आधा इधर आधा इधर. So that is also a निशानी or an example of sigma bond. अब the probability of finding the electron is maximum in the region between the two nuclei. अब जो ये एक न्यूक्लिया है, ये एक न्यूक्लिया है, दोनों bonded and the maximum electron finding density will be in between them. Okay, यहाँ finding होगी. But on the other hand, pi bond जो होता है उसके अंदर ऊपर ऊपर होती है. I don't want to confuse you. अभी हम पहले सिर्फ सिग्मा समझते हैं, then we'll go with pi.
अब the first bond formed between any atom is a sigma bond. We know. अब I want you all to be actually broader enough with your mind that you may understand कि मैं अब पी एक्स पी वाई पी जेड की बात करूंगी. ओके, तो अंडरस्टैंड कि जो भी पहला बॉन्ड बनेगा वो पी एक्स पे ही बनेगा. वी नो दिस. ओके, कि जो भी दो एटम्स हैं वो पहले तो हमारे पास सबसे पहले एक्स पे ही लाई करता है ना, तो एक्स एक्स सबसे पहले मिलती है, उसके बाद वाई और जेड मिलते हैं ना पीछे से. तो दैट्स मीन कि सबसे पहले जब एक्स एक्स मिलेगी तो दे आर पैरेलल टू द बॉन्ड एक्सेस and they are in between. Their electron finding density is between the nuclei. So the first bond that is formed in any atom is sigma bond. Sigma bond के बाद भी आगे bond बन सकती है, लेकिन हो सकता है कोई हाइड्रोजन जैसा एटम हो जिसके पास सिर्फ एस और एस हो, उनका दो एस और एस कंबाइन हो या यहाँ मिले, दोनों between the nuclei है, so it has only one sigma bond. हो सकता है that would be another anything else. लिथियम में अगर देखा जाए तो लिथियम में हमारे पास P1 होता है, तो उसके अंदर भी वी हैव सिग्मा बॉन्ड, उसका पी एक्स जो होता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उसका पी एक्स जो है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है. फॉर एग्जांपल यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है. दे बोथ कंबाइन एंड दे फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड. सो इट्स ऑल लाइक दिस. बट फॉर एग्जांपल वी हैव, आई थिंक वी हैव बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, जिसका बॉन्ड टू होता है, बट वी कांट एक्सप्लेन इट राइट नाउ बिकॉज उसमें हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी. सो आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज्ड. एंड इलेक्ट्रॉन, और अब हमें ये बात भी समझनी होगी, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया. अब जो इलेक्ट्रॉन ने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा दे विल कॉल सिग्मा इलेक्ट्रॉन. ओके, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग इन द एक्स एक्सिस. आप इससे भी समझ सकते हैं, एक्स एक्सिस से आप कह सकते हैं कि इसको ये वाई एक्सिस है. हाँ, अब यू कैन अंडरस्टैंड. नहीं, रोटी खाऊंगी. अब नाउ अ पाई बॉन्ड, a bond which is formed when an already sigma bonded have been formed. ओके, वो बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड के बाद बनेगा. अब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया किसी भी चीज में. हाँ, एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, वी हैव सिग्मा बॉन्ड ऑन पी एक्स. अब हो सकता है उसके अंदर पी वाई भी हो, लाइक वी हैव इन कार्बन, like we have in what in the sixth atom, what we have in the sixth group, I can't remember actually. So like carbon, अब कार्बन के अंदर क्या नाम है, पी एक्स पे भी है, पी वाई पे भी है. वी हैव लाइक दिस, इसके अंदर इस तरह से होता है. ओके, S2 1s2 and 2s2, then we have 2p, 2p4. Do we have 2p4 or 2p2, I think we have 2p2. I don't, yeah, we have 2p2. Okay, so 2p2. अब इसमें है हमारे पास, अब इसमें अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा. अब दो इलेक्ट्रॉन है सिर्फ पी के अंदर, बट यहाँ पे हमारे पास नहीं है, तो उस बात को भी छोड़ दें जेड वाले में क्यों नहीं है. बट जब इसका वाई वाला होगा, अब एक्स एक्स पे तो ये बॉन्ड बन गया पी पी का. ठीक है, अब नाउ वी हैव टू मेक अ बॉन्ड ऑफ पाई. अब एक इस तरह से होगा उसका पी एक्स, अब पी वाई जो होगा वो इस तरह से होंगे दोनों. अब ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगी, ये दोनों बनाएंगी, तो दे विल मेक अ पैरेलल बॉन्ड, द बॉन्ड पैरेलल टू बॉन्ड एक्सेस. अब बॉन्ड एक्सेस इस तरह से है, ओ सॉरी पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर, बट ये परपेंडिकुलर है. So this bond, which is perpendicular to bond axis, is called sigma bond. Okay, it's called pi bond. Sorry, I want to go down. And remember कि जब भी हमारे पास pi bond बनता है, that is after the sigma bond. सिग्मा बॉन्ड किसी भी उसमें जरूरी है. whenever we have s होगा हमारे पास, तो s में तो बनेगा ही सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एक्सेस होता है. वी हैव पाई, वो p है हमारे पास, तो p के अंदर पहले x बनता है फिर y बनता है, जैसे मैंने भी कार्बन में आपको समझाया. सो यू वुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग, और आपको समझ में आ गया होगा दैट व्हाई सिग्मा बॉन्ड इज नेसेसरी, क्योंकि हमारे पास x पे हमेशा बॉन्डिंग हो रही है. तो सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज नेसेसरी फॉर दैट. आप P2 भी ले लें, आप P3 भी ले लेना, देन आफ्टर दैट आपको वो लेना पड़ेगा, क्योंकि P के भी शुरू में आएगा, उसके भी शुरू में आएगा, S के भी शुरू में आएगा, D के शुरू में भी आएगा, बट वी आर यूजुअली ओनली गोइंग विद S और P की एक्सप्लेनेशन से जा रहे हैं. दे मस्ट बी कोप्लानर.
Coplanar means they exist on the same plane. अब how can you say कि ये जो दोनों p ऑर्बिटल हैं ये दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए, ओके, एंड देयर एक्सेस मस्ट बी पैरेलल, इनकी एक्सेस क्या हो, एक दूसरे से पैरेलल हो, देन दे विल बॉन्ड लाइक दिस, ये इस तरह से बॉन्ड बनाएंगे, और यहाँ पे जो है दैट विल बी द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। फिर ये उसके पैरेलल हो गई, न्यूक्लियाई के ऊपर और नीचे हो गई, जो वो था वहां वाला, सो दैट इज द रियल थिंग। They are unsymmetrical, they don't have any symmetry on the bond axis, and I told you कि above or below होती है, the overlap of p order is not good in sigma bond. Up now that the overlapping of pi bond is not as good as sigma bond. Sigma bond is really what we say strong or stable, but pi bond is not as stable as it is as that is. Okay. Okay, sigma bond is stronger, it's stable, it is linear, it overlaps more, and it is between two nuclei of an atom. Its energy is low because it releases more energy, and there are two lines joining the nucleus. There are various types of bond in it, which will be I have explained कि S से मिल सकता है, SP से मिल सकता है, यहाँ PP से मिल सकता है. These are the types of the sigma bond जो basic है. अब now come to pi bond. जो pi bond है that is always on like what we say on py and pz orbital. इसमें एनर्जी ज्यादा होती है, अंदर ज्यादा होती है, एंड स्टेबल कम होता है ये बिकॉज एनर्जी बाहर कम होती है. above or below an atom are find it non-stationary and delocalized. Okay. अब remember the in case of pi bond formation where there is a covalent bond, the electron density is greatest above and below the line joining point. I also told you कि ऊपर और नीचे क्या नाम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी. on pure parallel coplanar half filled p orbitals. अब pure जो parallel it is okay okay हाँ पहले अप्लाई. अब नाउ अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास दो लाइन है, ठीक है. अब इट इज सेइंग ये पी ऑर्बिटल का बता रहे हैं. पी ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, हाफ फिल होना चाहिए, हाफ फिल है, कोप्लेनर होना चाहिए, सेम प्लेन में लाई करना चाहिए, एंड दे शुड बी पैरेलल एंड दे शुड बी प्योर पी ऑर्बिटल्स ऑन एडजेसेंट एटम, और यही पाई बॉन्ड बना सकते हैं. ओके, दे कांट इस तरह से हो, इस एक ऑर्बिटल इस तरह हो, इस ऑर्बिटल इस तरह हो, दे कांट मेक बॉन्ड. ओनली वन बॉन्ड इन एनी मल्टीपल बॉन्ड कैन बी सिग्मा बॉन्ड. ओके, सारे बॉन्ड में से सिर्फ एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो सकता है. ये बात रिमेम्बर दिस बिकॉज एक्स एक्सेस हमारे पास सिर्फ एक ही है, वाई हमारे पास दो है, वाई हमारे पास जेड है. अब पी के अंदर आप बॉन्ड बना रहे हो तो पी के अंदर वी हैव एक्स ओनली वन, तो आप पाई और जेड नहीं बना सकते. वेदर जो रिमेनिंग बॉन्ड होते हैं वो सारे पाई बॉन्ड होते हैं. अब हाइब्रिडाइजेशन के केस में जो होती है ओवरलैपिंग ऑफ एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज प्रोड्यूसेस सिग्मा बॉन्ड. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो सारी क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड की होती है. हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो होते हैं जैसे कि एस के अंदर हुआ तो फिर ओके. So I hope this is okay. And now, in the next video lecture, I will be explaining the applications of valence bond theory with its limitation. Okay, bye bye. Allah Hafiz till then.